Hello, bachcho, let's see the question. So the question is saying choose the incorrect statement for the ribosomes. Here we have to figure out the incorrect statement. A is saying granular, non surrounded by any membrane. B, eukaryote ribosomes of 80S and prokaryote ribosomes of 70S. C, S stands for sedimentation coefficient, and D, none of the above. So what could be the key concept here? So the key concept here will be ribosome. Talking about ribosome, ribosomes are the structure that is associated with the plasma membrane एंड इनका साइज बेसिकली होता है साइज 15 से 20 नैनोमीटर के बीच में होता है. राइबोसोम मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स. एक तो होती है लार्जर सब यूनिट एंड द स्मॉलर सब यूनिट. प्रोकैरियोट में हमारा जो आरएनए होगा सो राइबोसोम होगा वो मिलेगा 70S वेयर द एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट वेयर एस इन द केस ऑफ यूकैरियोट हमारे पास जो राइबोसोम होगा वो होगा 80S. Ribosome is granular as well as it is a membrane bound structure. Membrane bound. It is not membrane bound structure. कि इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ग्रैनुलर होता है. जब बहुत सारे राइबोसोम्स हमारे mRNA के साथ जुड़ जाते हैं तो उसको हम पॉलीसोम्स कहते हैं. राइबोसोम्स ऑल्सो हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस. According to the option, granular not surrounded by any membrane, this is also right. B, eukaryote ribosome is 80S, yes, and prokaryote of 70, this is also true. C is saying S stands for sedimentation coefficient, this is also true. So there is no statement that is incorrect. Answer हो जाएगा none of the above. So we can write the answer as D. Hope you understood that. Best of luck.